Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 29th of June 2020 and we shall be seeing all the articles that you must go through from the exams perspective. आज near about 7 articles है हमारे पास from The Hindu and there are 2 articles from Indian Express. We shall be seeing today 9 articles in total. आज हिंदू के फ्रंट पेज पे कुछ न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू चाइना जो हमने सेलेक्ट नहीं करी है, बट यू कैन गो थ्रू देम टू रिवाइज एंड अपडेट द इशू. सो दीज आर द 2 न्यूज ऑन द फ्रंट पेज दैट यू कैन गो थ्रू विद रिस्पेक्ट टू द ऑनगोइंग इंडिया चाइना border tensions. Our first article of the Hindu is on page number 5. Draft EIA notification fosters non-transparency, encourages environmental violations. तो इस आर्टिकल में कुछ concerns mentioned है with respect to the new draft EIA notification, that is the draft EIA 2020, which has been brought out by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to replace the older EIA version that is of the 2006. तो इसकी limitations continuously news में आ रही हैं and previously we already have seen few of the limitations with respect to the draft EIA 2020. इस आर्टिकल में एक major limitation है that is with respect to the hydropower projects and the irrigation projects. तो सिर्फ एक limitation आपको इस आर्टिकल से मिलेगी and you only have to pick that one limitation and add it to the list of other limitations that we already have seen in our previous articles. Next article is brief reprieve. So FATF ने extension दिया है not only to the Pakistan but to other countries as well due to the coronavirus pandemic, and this is the extension of 3 months that has been given to these countries. So ये article briefly discuss करता है about the FATF, Pakistan and the grey list. तो कुछ keywords हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए both from the prelims and mains perspective, and this article can be given a read to quickly revise the issue with respect to the listing of Pakistan onto the grey list of the FATF and its chances of further being put up onto the blacklist of the FATF, which would be considered by the later in its next summit or in its next session. Next article is letter and spirit. It talks about the new domicile rules which have been brought in by the government to provide the citizenship rights to all those persons who were denied previously of the opportunities due to article 370 and 35A. तो ये articles क्योंकि अब abrogate कर दिए गए हैं by the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, thereby paving way for the domicile rules so as to provide hope for this segment of the population which was earlier deprived of such rights. तो ये article में positives और negatives दोनों mentioned है and also few of the concerns which are likely to take place due to the implementation of these domicile rules. Next article is द मपिला अपराइजिंग. सो 1921 में मालाबार रेबेलियन हुआ था जिसको मोपला रिवोल्ट भी बोलते हैं एंड इट इज अ कोर पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस, विल कंप्लीट इट्स 100 ईयर नेक्स्ट ईयर. तो ये टॉपिक ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड दिस आर्टिकल हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट द मपिला रिवोल्ट एंड द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो कंटेम्पररी इश्यूज को ये मोपला रिवोल्ट से लिंक करते हुए बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है एंड major ideology which drove this revolt in 1921. So it is again a very important article of the day and must be given a careful read. Next article is रशिया एग्रीज टू स्पीड अप डिफेंस डील. तो इंडिया रशिया रिलेशंस का ये एक अपडेट है वेयर इन रशिया हैज एग्रीड टू क्विकली सप्लाई सम ऑफ द अर्जेंट डिफेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया. तो चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड ऑफ के कारण डिफेंस डील्स को फर्दर एक्सपेडाइट किया गया है इन द विजिट ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टू द रशिया एंड रशिया हैज एग्रीड टू द सेम. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द जॉइंट वेंचर एंड द ट्रांसफर ऑफ सम ऑफ द क्रूशियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज दैट रशिया हैज एग्रीड to give to India. तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होगी. So all these defense deals that have been signed with Russia have an important thing which is related to the co-manufacturing and transfer of the crucial technologies to India. So this is in line with the vision of making India self-reliant by boosting indigenous defense manufacturing. Next article is Center unveils new rules to regulate exotic animal trade. So this article again has many keywords and it becomes important from the prelims perspective. तो environmental ministry ने नए rules निकाले हैं to regulate the import and export of exotic wildlife species. और ये article important बन जाता है because recently FATF ने अपनी first ever report release करी थी on the illegal wildlife trade, wherein it mentioned the extent of the illegal wildlife trade across the world and the need to ramp up the global cooperation so as to fight this menace in the form of organized crime dealing in the wildlife. तो यहाँ पे prelims point of view से काफी important keywords हैं जिनकी background study करना important है
And also you need to remember about important institutions dealing with the exotic species in India, like the Directorate General of Foreign Trade, Chief Wildlife Warden of respective states एंड दी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये पॉइंट्स को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज SC dismisses review petitions challenging verdict on adultery। एक recent petition फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में to review its order on the adultery। तो adultery which was mentioned in section 497 of the Indian Penal Code was decriminalized by Supreme Court of India in 2018। इस आर्टिकल में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे which will help you to quickly revise that judgment and so you can quickly go through this article। Next article is on the editorial page of the Indian Express, those in need। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान और द स्टिमुलस पैकेज 2.0 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे कुछ मेजर्स टू गिव रिलीफ टू द एमएसएमई सेक्टर, और उसमें जो सबसे बड़ा मेजर था दैट वाज द 3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स टू बी गिवन टू द एमएसएमईज व्हिच विल बी बैक्ड बाय द सेंटर। तो इस आर्टिकल में मेंशन किया है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दैट स्कीम along with some of the suggestions that how that scheme can further be improvised। Next article is Why India is producing less and less oil। ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है with a unique content wherein it tells you that why India is producing less and less oil over the years। तो ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है since 2012 in India। तो इसके पीछे जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड ऑल्सो देयर इज मेंशन ऑफ फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स टू बूस्ट द ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस आर्टिकल के पॉइंट्स को आप बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज them in the self-reliant India vision, cutting down the imports in India, increasing investments in India, and obviously to address the questions with respect to the oil industry of our country। So these were some of the articles that were important today, and with this we will wrap up the daily news nuts of the day। Screenshots of all these articles have been posted on our Telegram channel, you can download them from there। Please post your suggestions, doubts, queries in the comment section below। Keep learning guys, thank you।